ये इनकी दो कैटेगरीज यहाँ पे होगी, शॉर्ट पोएम्स एंड लॉन्ग पोएम्स। अब अगर है शॉर्ट एंड लॉन्ग पोएम्स की बात आती है तो शॉर्ट पोएम्स में यहाँ पे आ जाएगा सॉनेट्स, ठीक है, दे आर 154 इन नंबर, इनके बारे में आपको देखना है और जो मेजर सॉनेट्स के नाम आते हैं वो आपको पढ़ना भी है। देन अगेन शॉर्ट पोएम्स इटसेल्फ, शॉर्ट पोएम्स, देन ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट पोएम मिलेगी, फेनिक्स इन टर्टल एंड सेवन एजेस, इस तरीके की जो पोएम्स है व्हिच आर आल्सो अ पार्ट ऑफ ड्रामा, बट शॉर्ट पोएम्स और सॉन्ग्स यहाँ पर आएंगे, ये आपको इसमें देखने हैं जो इंपॉर्टेंट है वो, केवल आपको बेसिक नेम्स जो है वो पता लग जाएगा। नहीं, रॉयल राइटर्स प्रीति आज नहीं हो रहा है, हम केवल एक बार शेक्सपियर का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ढंग से कि आपको इसमें क्या क्या स्पेसिफिकली पढ़ना है, क्योंकि हमने कल तीनों रॉयल राइटर्स कर लिए थे। अब जो हम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं तो वी आर वेरी कंफ्यूज बिकॉज yesterday but I have told you the overall structure of Shakespeare and his writings I have given you, but I have not given you the classified things which you need to read, ठीक है। स्पेशली कौन से पॉइंटर्स को आपको ध्यान में देना है वो नहीं दिखा है आपने, केवल वही पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग पोएट्रीज के अंदर, तो यहाँ पे आपका आता है वीनस एंड एडिनस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज। ये दो पोएम हैं जो आपको लॉन्ग पोएट्रीज के अंदर करनी है, लेकिन ये करनी है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द पोएटिक स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर, तो इसको हमें ढंग से पढ़ना है। इसमें भी जो मेजर कमेंट्स किसी ने करे हैं इसके बारे में किसी ने कुछ बताया है, तो वी नीड टू रीड एवरीथिंग अबाउट इट, राइट। इनके क्लोज वर्क कुछ भी नहीं है, ही हैज नॉट रिटन इट, ही वाज ओनली इनटू द शॉर्ट पोएट्रीज एंड ड्रामा, ठीक है। उसके बाद इनके जो मेजर स्टेटमेंट्स हैं वो हम देखेंगे। नाउ इफ वी आर कमिंग टू ड्रामा, सो ही हैज रिटन ऑल द कैटेगरीज ऑफ ड्रामा, ही हैज रिटन व्हाट आर द कैटेगरीज बेसिकली ही हैज फॉलोड। सो इन ड्रामा ही हैज रिटन हिस्टोरिकल ड्रामा एंड हिस्टोरिकल ड्रामा, ट्रैजिक ड्रामा, कॉमिक ड्रामा। इसके अंदर इनके जो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ही हैज रिटन 38 प्लेज, ठीक है, 38 प्लेज, ऑल जनरल्स। मैंने कल आप लोगों को जितने भी जनरल्स बताए थे वो भी बताए थे इनके। एंड अब इसमें से आपके जो मेन आपके प्लेज आते हैं, फेमस फॉर हिज ट्रेजेडीज, ठीक है, ही इज फेमस फॉर हिज ट्रेजेडीज। तो नाउ व्हाट यू नीड टू रीड इज द इंपॉर्टेंट 60 प्लेज यू नीड टू रीड, यू नीड टू प्रिपेयर ओनली 16 प्लेज रिटन बाय हिम, जिसके अंदर आपके चार मेन ट्रेजेडीज आ जाती हैं, ओथेलो, हैमलेट, किंग लियर एंड मैकबेथ। ये चार आपकी मेन ट्रेजेडीज आ जाती हैं। कॉमेडी के अंदर आपके रोमियो जूलियट आ जाता है, एज यू लाइक इट, कॉमेडी ऑफ एरर, ऑलवेज दैट एंड वेल, ठीक है। रोमांटिक प्लेज के अंदर आपका टेम्पेस्ट आ जाता है, मिडसमर नाइट ड्रीम आ जाता है, देन टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम्स एंड ट्वेल्थ नाइट, ये तीन प्लेज आपके रोमांसेस के अंदर आ जाएंगे। देन हिस्टोरिकल प्लेज के अंदर रोमन हिस्ट्रीज के अंदर जूलियस सीजर, ट्रायल्स क्रूसीड एंड एंटोनी क्लियोपेट्रा, दीस थ्री यू नीड टू डू। एंड ब्रिटिश हिस्टोरिकल प्लेज के अंदर यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट हेनरी 4, हेनरी 6 एंड रिचर्ड 3। ये जो इनके प्लेज हैं इसके बारे में यू नीड टू हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि उसके अंदर फुल कैरेक्टर्स हैं हेनरी सीरीज के अंदर, उन सब का आपको पता लगाना है। तो ओवरऑल देयर आर 16 प्लेज व्हिच यू नीड टू रीड, व्हिच यू नीड टू हैव सम आइडिया बिकॉज़ इसमें इन 16 प्लेज के अंदर से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर इन शेक्सपियर। अब इसके बाद आपका थर्ड कैटेगरी आता है शेक्सपियर का, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है। इसी के साथ साथ आपका एक थर्ड कैटेगरी आता है इसमें, दैट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, हिज कंट्रीब्यूशन इन, इन्होंने कितने वर्ड दिए, इन्होंने स्पेलिंग्स को कैसे चेंज किया, व्हाट वाज द वोवेल शिफ्ट ही हैज डन। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इनके कंट्रीब्यूशन एंड द कमेंट्स ही हैज गिवन टू द अदर राइटर्स, ये दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली लेनी है अदर देन हिज राइटिंग्स। सो लैंग्वेज कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अप्रॉक्सिमेटली 2500 प्लस वर्ड्स इन्होंने कंट्रीब्यूट करे हैं। ही हैज इनोवेटेड न्यू फॉर्म ऑफ स्पेलिंग्स, इन्होंने न्यू स्पेलिंग्स को यहाँ पे जनरेट करा है, न्यू फॉर्म्स ऑफ पोएट्री एंड राइटिंग ड्रामा ही हैज जनरेटेड। सो दिस इज व्हाट हिज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर दैट यू आल्सो नीड टू सी एंड बेसिकली कंसीडर व्हेन वी आर टेकिंग शेक्सपियर। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया अबाउट विलियम शेक्सपियर, व्हाट यू नीड टू डू। अब अगर हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जब हम जैकोबियन राइटर्स पे जाएंगे तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जैकोबियन राइटर्स में से कितने ऐसे राइटर हैं हु आर फॉलोइंग शेक्सपियर, ठीक है, हु फॉलो शेक्सपियर फॉर देयर राइटिंग्स। बिकॉज़ हम जैकोबियन राइटर्स में दो रॉयल राइटर्स को लेते हैं, बेन जॉनसन एंड फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन और बेन जॉनसन जो है दे आर कंटेम्परेरी टू शेक्सपियर एंड दे वर राइटिंग ऑब्वियसली, दे वर आल्सो सीकिंग फॉर द फेम लाइक शेक्सपियर, बट फ्रांसिस बेकन वाज नॉट एट ऑल इन द रेस ऑफ राइटिंग लाइक शेक्सपियर बिकॉज़ ही वाज नॉट अ पोएट, ही वाज नॉट अ dramatist, he was a prose writer, he was an essayist and an intellectual person who was writing about the facts of life and the scientific ideas he was giving to us. Now if I'm talking about Ben Jonson, then Ben Jonson was a narrator and he was also a royal person. He was the son of a courtier and even Elizabeth has supported him for his writings. So Shakespeare was also supported Ben Jonson for various things. He enacted in his plays, he gave the complete support to Ben Jonson to flourish. But the writers who came in this age and also has started writing, they were named as son of Ben. Besides a few of the writers who were already writing during the time of Shakespeare and Ben Jonson were parallel writers. Besides that, there is a range of writers who were named as son of Ben because William Shakespeare was favorite of Queen Elizabeth and she has given the royal theatre to him. So when the dynasty was changed and the rule was changed, James I came on throne and the Tudor dynasty came to an end. Then obviously, besides Shakespeare being the best writer, James I never accepted him as a royal poet or a court poet. He never asked him because he was favorite to Elizabeth. He has written all his plays in a way that he portrayed the female character is stronger than the male character, and always the female characters are winning the battle. They are the most intellectual one because the rule, the throne belongs to a lady, the rule belongs to a lady. There was a lady, a strong lady was sitting on the throne of England, that is Queen Elizabeth. So obviously all her strongest characters were female. Even some critics have said that Shakespeare has only heroines, there is no hero. Why? Because whether it's a play Hamlet, but everything is done by Gertrude, and even she was the one who was the main center of the play. Hamlet was doing everything. There was no much role of the female. But besides that, if we say Othello, then Desdemona is a very strong character, unshaken one, very strong-headed. If we talk about King Lear, then Cordelia is a very strong character. Regan and Ronald was a villainous character, and King Lear's character is very weak in front of all the three. If we talk about Macbeth, then Lady Macbeth is a very strong character. If we talk about comedies, then As You Like It, Rosalind is the lead character. Besides Othello, he was not the one. Romeo Juliet, that Juliet is the one who has taken the first step. If we
talk about Merchant of Venice, then Portia is a character. Yes, that play also comes in Romance's Merchant of Venice. वो भी आपके comedy के अंदर आएगा, tragic comedy mix channel में Merchant of Venice you need to prepare. If we talk about Troilus and Cressida, then Cressida is the one who was adamant and was taking decision for the sake of country. Besides being a female character, a weaker character, she is the one who was going against the flow of the society. Antonio and Cleopatra. Cleopatra is the one who was ready to take the enmity of Octavius, Caesar Octavius. Being a female, she knew that the country is stronger than her country, the army is stronger than her army. Then even just to have a faith in love, she did that. So similarly, there is a range of female characters which belongs to Shakespeare because he was writing in the time when the female was on the rule. So when Elizabeth died and James I came on throne, he doesn't like all these things and he preferred a writer who was writing about the general society, who is not portraying, keeping someone in the mind. He was not portraying or creating the character, keeping the ruler in the mind, or who was not popularizing Elizabeth at any stage. So he found that Ben Jonson is already a son of a courtier and he cannot, James I cannot replace the whole parliament of England. वो members को वही रहेंगे, केवल ruler change हुआ था. तो उसने देखा कि okay fine, ये एक parliament के member का ही बेटा है, he is writing literature. Let's give him a chance, and if I'm giving him a chance who is not so famous, not so brilliant, then obviously he will consider the thing and will write something about me, or at least will favor me for that. Ben Jonson obviously did that, and he was declared as the court poet, though there was no Royal Society and no poet laureateship was there. So he was not the first poet laureate, but he was the first member of the Royal Society, considered as the first unofficial member of the Royal Society, because the idea of creating a Royal Society was always there in the mind of James I. जब उन्होंने Royal Library बनाई, उन्होंने James I's Bible लिखा, उन्होंने Church of England establish करा, तो उन्होंने Royal Society का proposal भी रखा था, लेकिन because of certain things चीज़ को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा initiative लेना था. Like he has to pick out all the best of the members in every field. जितने भी fields हैं, like sports है, bravery है, soldiers है, archery है, poetry है, जो commerce है, जितने भी हैं उनमें best of the fields के उन्हें उठा के कोर्ट मेंबर की तरह रखना था, उनको knighthood देना था. So जैसे कि फिलिप सिडनी की मैंने बात करी थी, इस तरीके से बाद में जितने भी पोएट लॉरेट्स हुए उन सबके आगे सर लगा था, क्योंकि वहाँ पे पोएट लॉरेटशिप देना मीन सर वहाँ पे टाइटल पे लग जाता है, ठीक है, और दूसरी बात उनकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है. तो दैट इज द फर्स्ट आइडिया अबाउट पोएट लॉरेटशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी. सो जेम्स वन हैड दिस आइडिया इन हिज माइंड एंड ही वांटेड टू इंप्लीमेंट दैट इन इंग्लैंड आल्सो. सो बेन जॉनसन बिकेम द फर्स्ट पोएट. अब जितने भी उसके बाद राइटर्स आए उनको सन ऑफ बेन क्यों कहा गया? दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज़ दे ऑल वर राइटिंग इन अ वे ऑफ शेक्सपियर. दे वर नॉट राइटिंग इन अ वे ऑफ बेन जॉनसन, क्योंकि बेन जॉनसन का राइटिंग स्टाइल अलग था, शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल अलग था. ही वाज राइटिंग अबाउट द कोर्टली लव, कि दोनों रॉयल्स हैं, उनके बीच का है, या लड़की रॉयल है, लड़का गरीब है, लड़का रॉयल है, लड़की गरीब है, इस तरीके की लव स्टोरीज को क्रिएट करा था जो हम नॉर्मली बॉलीवुड में देखते हैं. तो उस तरीके की कोर्टली लव स्टोरीज को उन्होंने क्रिएट किया था. एवरीवन इन द Jacobean age was writing the same. They were all following the way of Shakespeare, but they were named as son of Ben because they were younger to Ben Jonson. They were writing after him, so it has been said that they all were following the trend of Ben Jonson because he was the court poet. ठीक है, just to give not much importance to William Shakespeare, but he was a brilliant star and the sun cannot be hidden by clouds. रोशनी रहती है, हम कहते हैं ना कि अगर बादल भी आ जाए कभी दिन और रात का तो पता लगता है, that is because of sun. So this is what Shakespeare is. Shakespeare is the sun in the field of literature. If you are talking about any of the writer of today or tomorrow or you are studying the past, ancients or whatever, you cannot hide the name of Shakespeare in British literature or in the compiled English literature. Complete English literature maybe you cannot hide the name of Shakespeare because his contribution is great, because his writing style is universe. You are talking about today's time, his philosophies are the same. He was not talking about much of the moralities, क्योंकि morality comes up according to the situation. That is what his philosophies are. तो इस तरीके की जो भी philosophies इन्होंने अपने वर्क्स में दी है, जो मैसेज ये बेसिकली देना चाहते हैं, जिस तरीके की डीलिंग्स इनके वर्क्स में रहे हैं, that all has to be seen in his work. And जो famous आपके वर्क्स हैं, जो 16 tragedies की मैंने बात करी है, that is what you all need to prepare in Shakespeare. तो ये आपका शेक्सपियर के बारे में मैंने पूरा contribution बताया है, इनका पूरा जर्नी बताया है और टाइम की पॉलिटिक्स बताई है related to the writers. Now we are starting Jacobean writers because they are also very important and we need to start it on time. So let's start with Jacobean age. So इसका हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बता द हिस्ट्रीज ऑफ Jacobean पीरियड, इनकी पॉलिटिकल सोशल हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमने डिस्कस कर लिया था. Now it's a time to talk about the major writers, and the first writer which is here in front of us is Ben Jonson. 1573 to 1637, he lived approximately 20 years after Shakespeare. But even though his contribution in the field of literature is not so much, is not much is not famous. बहुत ज़्यादा famous इनके works नहीं हैं. कुछ works हैं जो अच्छे हैं, famous हैं. Part of university है, so we have to do this writer. But yes, you don't need to give much focus on the literary contribution of this writer. So let's see. Most commanding literary figure among the Elizabethans, he was most commanding because he was a part of court. He gave birth to classicism of 18th century. Yes, this is something important. He gave birth to the classicism of 18th century. Basically, what is classicism of 18th century? The classicism of 18th century is जब हम 18th century में जाते हैं, Augustan era में जाते हैं, and the people found that there is someone who is talking about the writers, who is talking about the philosophies or literary criticism or the philosophies given by the ancients. जो हमारे Roman Greek writers हैं जिन्होंने जो philosophies दी है, how to write a literature, that is being taken by him. इसीलिए इनको commanding literary figure कहा है because his most focus was in writing his style, creating like writers. इसका जो main focus था that was on ancient. New L'Oreal Paris Hyaluron Pure with salicylic and hyaluronic acids gives 72-hour fresh air. And criteria. पहले जो writers थे उनका क्या criteria है, उन्होंने कैसे बताया है, उन्होंने किस तरीके की writing style को बताया है. That is what his focus is all about. कि किस तरीके से कौन सी चीज़ को लिखना है, जो हमें writers ने बताया है, उन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए. If we are not conscious about criteria to be that is suggested by the ancient writers and they have asked us to follow, if we are not following that particular criteria, if we are not
following the classical writers and their criteria, their ideologies or their rules of the writing, then obviously we are breaking the rules. We are he created a notion that we are doing something wrong. We are going beyond the boundaries, which is not good. तो इन्होंने classicism की बात की कि one should follow the classicals and classicism. ठीक है, he was born in Westminster. His Eastward Ho is a comedy which was written was an offense to King James. He wrote it with Chapman and Marson. ये उसी टाइम के writers हैं और उन्होंने just because no one was accepting James I of England after Queen Elizabeth, because Tudor dynasty has came to an end and he was the ruler from Scotland and belonged to the Stuart dynasty. The dynasty has changed, so no one was accepting King James I. And similar thing is done by him. He and the other writers were also opposing him. Though Shakespeare doesn't have anything to do with the politics, he was only working for literature, and we don't find any kind of traces of the politics or the effect of politics in Shakespeare's work. But Ben Jonson, he was a courtier and he was a son of a politician, so we can see such things in his works. And the contemporary writers of Jacobean age were also doing the same. Like they found that as a political issue, because in 1605 an attack on James I was done as a gunpowder plot. उसके ऊपर अटैक हुआ था, उसे मारने की कोशिश की गई थी, and the name of the culprit was Guy Fawkes. Guy Fawkes ने अपने 4 और लोगों के साथ इस कोशिश को किया, उसको पब्लिक पनिशमेंट मिली थी. तो people were scared of doing any kind of conspiracy against him. कि कुछ भी हो, वो किंग है, उनके पास पावर है, उनके पास सिक्योरिटी है, and if we are doing something wrong against him, हमें पकड़ ही लिया जाएगा. तो उस चीज को रोकते हुए, उन चीजों को हटाते हुए उन्होंने क्या करा कि इन राइटर्स ने when they collaboratively started working, because it was impossible for any of these writers to create a good work, तो इन लोगों ने collaboratively काम करना शुरू करा. They all are having the ideas and putting their inputs into one. इन्होंने कॉमेडी क्रिएट करी ईस्टवर्ड हो, और इस तरीके के ये काफी वर्ड्स आए हैं, ईस्टवर्ड हो, वेस्टवर्ड हो, नॉर्थवर्ड हो, इस तरीके के जो ये वर्ड्स आए हैं. The same work, it was a comedy and that was the offense of King James I. क्योंकि King James I जो है, मैंने भी बताया people were against him, तो इसी वजह से जब इनको इनके अगेंस्ट थे लोग, तो इन्होंने इनको पूरा प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं दिया. और that is the reason इसमें कुछ चीजें ऐसी दिखाई गई which was in the offense of King James. उनके लिए काफी बुरी थी. Offensive is like to insult him, और they were not it was because in the comedy, so it was indirect. He cannot claim it properly, but yes, it was in the offense of the ruler. उन्होंने लिखा. They can switch it to some other, जो literary figure cannot be claimed for that, or they were not punished for it. उनको कभी punishment भी नहीं मिला इस चीज के लिए, because इन्होंने इसको कॉमेडी और सटायर के रूप में लिखा था. Then Chapman was a friend to Ben Jonson and Marson was his enemy. इस वर्क के बाद ये जो ट्रिटी थी, ये तीनों का एक ट्रायंगल था, एक ट्रिटी थी, वो कहीं ना कहीं नहीं चलती थी, because Chapman and Marson was friend. But Ben Jonson was a good friend of Chapman. He was a contemporary writer and was working on the writers like University with Chapman. George Chapman is the writer जिसने जो आपके क्रिस्टोफर मार्लो है, उनका एडवर्ड सेकंड एंड हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट किया था. He was a very good writer. He respect all these writers, but Marson has his own philosophy and used to write in an individual manner. Ben Jonson के साथ Marson के views मैच नहीं होते थे, and Chapman, because he was respecting all the university with, so it was good for Ben Jonson. It is always good for Ben Jonson. Now, he killed an actor in a duel. He escaped by pleading benefit of clergy. Shakespeare acted in his play Everyman in his humor in 1598 on King James' accession. Johnson's mask won his royal favor. Right. So this is the basic reasons which we should notice. यहाँ पे क्या हुआ था? Because he was not getting any kind of fame, because he was unable to get the fame and attention of the public. So on the request of Queen Elizabeth or the other royals, Shakespeare helped Ben Jonson a lot. और उसके पीछे reason ये था because he was not first of all a writer. He was a politician. He was a very long, 6 feet 2, 3 inches long, very bulky, very strong and a fatty person, and a very short temper. So he used to have arguments and fights with the co-workers, and that is why he was not allowed by Elizabeth to be a proper member of parliament. And when she was asked to go into the literary field, because he had interest in that, he was a writer, and he was writing when he was performing. Then one day he had some argument with the actors when he was in the field, and it was like he was trying to write and became a member of an actors group. He became an actor first. So जब वो acting field में थे और Blackfire या इस तरीके के थिएटर ग्लोब वगैरह के जो actors की एक ग्रुप था जिसमें ये काम करते थे, तो अपने co-actor के साथ ही had a duel और इन्होंने उसके सर पे बहुत तेज मार दिया. He was dead and he had a case against him. But just because his father was a royal member, he was saved, and favor was asked by Shakespeare to support him in writing. So he created a play that is Everyman in his humor, and Shakespeare to support him, he took his team of actors and he himself has enacted in his play. So that if the name William Shakespeare is an actor of this particular character or उस actors list में नाम लिखा होगा जब theater के बाद, people will come to watch it and he will get the fame, and that same thing happened. And people know that Shakespeare is performing in this particular drama as an actor, तो लोग आए देखने के लिए. इनका first play था Everyman in his humor, that went well, बहुत successfully इस play को. लेकिन जब इसके बाद दूसरा play आया Everyman out of his humor and Shakespeare was not a part of it, people didn't went to see this, क्योंकि वो लोग Shakespeare को देखने गए थे. इनके play की स्टोरी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जो इसका सीक्वल निकाला Everyman out of his humor वो सक्सेसफुल नहीं था. ठीक है, शेक्सपियर ने इसमें कौन सा कैरेक्टर किया था? शेक्सपियर इनैक्टेड एज शेक्सपियर का कैरेक्टर था नोबल. ठीक है, शेक्सपियर का कैरेक्टर जो इसमें था दैट वाज नोबल. ठीक है, दिस इज अ कॉमिक कैरेक्टर. इट्स अ कॉमिक कैरेक्टर लाइक अ फूल कैरेक्टर का उन्होंने प्ले किया था. दैट वाज वेरी गुड एंड एवरीवन एप्रिशिएटेड ओनली वन कैरेक्टर, दैट इज नोबल. और एवरीवन इन हिज ह्यूमर और आउट ऑफ हिज ह्यूमर जो भी है उसका केवल एक ही कैरेक्टर जानते हैं, नोबल, जो शेक्सपियर ने प्ले किया था. उसके अलावा किसी को कोई कैरेक्टर याद नहीं है. इसी का बाद में इन्होंने एक प्रीफेस भी लिखा जिसको हम इनका क्रिटिकल वर्क मानते हैं, जिसके अंदर ही हैज टॉक्ड अबाउट द ह्यूमर्स, टाइप्स ऑफ ह्यूमर. तो इन्होंने इसमें 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स की बात की एंड दैट वाज अबाउट क्रिटिसिज्म. जो इन्होंने यहाँ पे लिखा 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स की बात करी है इन्होंने, दैट इज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. ये इन्होंने इसका क्रिटिकल वर्क लिखा था. पीछे आएगा इनका, दैट वाज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर. अब जैसे हम शेक्सपियर का देखते हैं उसका था कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें भी ही हैज टॉक्ड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर स्टाइल ऑफ क्रिएटिंग द कॉमिक कॉमेडी. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं इनका जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, ही टॉक्ड अबाउट द फिजिकलिटी एंड बेसिकली द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन which makes a person's character. That is what all about humor. Now again I want to make the announcement for
protein. It is not a and this target batch for paper 1 that is available in the price of 2000. Grab the opportunity as soon as possible so that you can start your preparation on time and your success will be guaranteed with us. Which was impression of this journey, but it was lost in fire before publication. इन्होंने एक वर्क लिखा जिसके अंदर इन्होंने बताया कि वो स्कॉटलैंड में ड्रमर जो कि पिलग्रिमेज है वहां तक वेस्ट मिनिस्टर से लंदन से पैदल गए और इन्होंने यात्रा करी और अपना सारा एक्सपीरियंस जो है वो उस बुक में लिखा लेकिन वो publication से पहले ही जल्दी खत्म हो गई. There is no publication about it. Then his work is Sad Shepherd, which is an unfinished work. We are not going to remember this. बहुत important नहीं है. He died in 1637 and was buried in Westminster Abbey. मैंने चौसठ के टाइम पे भी आपको बताया था. Westminster Abbey is particularly it's a graveyard for royals. It's a graveyard for royals. So इनका यहाँ पे cremation क्यों हुआ, इनका यहाँ पे funeral क्यों हुआ? Because he was an unofficial poet laureate बोलते हैं इनको. Unofficial poet laureate और he was a poet in the parliament of James I. और इनके grave पे जो initials लिखे जाते हैं, क्या लिखा जाता है? That is O. Rare Ben Jonson was written. Okay. Then Shakespeare took liberties with historical facts. इन्होंने कहा कि शेक्सपियर ने जो historical facts है उनके साथ काफी छेड़छाड़ किया. He make much of the liberties. Now he fought against the Roman tendency. His idea was to restore classical standard. He said drama should be a few hours or of a single day. A literary work should be historically correct. Tragedy and comedy should keep apart. Comedy should be moralistic and realistic by nature. All literary work should have a logical structure. So ये इनके comments हैं, इनके ideas हैं वर्क से पहले. These are philosophy. This is the philosophy by Ben Jonson कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. He fought against Roman tendency. इन्होंने जो romantic tendency, sorry Roman नहीं, it's a romantic tendency. ठीक है, जो ये Rome लिखा है, that means romantic. Why he was fighting against romantic tendency? Because according to him there is no such idea. See, the thing is you are fighting for fame, right? You are doing many things and not getting a proper fame which your rival writers are doing. You are not focusing on their labor, how much labor they are putting in their work, how much effort they are putting in their work to get fame. But you are just focusing on the fame they are getting, right? So just because you also want to go for the same kind of fame, name, money, respect, so what you start doing first, you start your own labor. If you are not able to do that much labor, if you are not able to get that much success, then what you start criticizing that particular person. People started focusing on you. There is someone who is criticizing the great man, right? So because you cannot be like a leader, you start criticizing a famous leader to become famous. तो आप जो famous leader है, जो mainstream में उसे गाली देने शुरू कर दो, लोग आपको देखेंगे ये कौन है, तो इसको गालियाँ दे रहा है, तो 100% आपको fame मिल जाएगा, focus मिल जाएगा. This particular para is all about because he was not able to get the fame and name like Shakespeare. He started criticizing him. So he fought against romantic tendency. सबसे पहले इसका romantic होनी नहीं चाहिए, कोई romantic tendency नहीं होती है. लव वगैरह जो है केवल दो टाइप के होते हैं, tragedy and comedy. क्यों कही इसने ये बात? क्योंकि क्लासिकल राइटिंग्स के अंदर रोमांटिक नहीं होते थे, वो जर्नीज के ऊपर नहीं लिखते थे, वो जर्नीज में या तो कॉमेडीज लिखते थे या ट्रेजेडीज लिखते थे. वो वहाँ एक्सपीरियंस की बात नहीं करते थे, वो केवल दो जानना की बात करते थे कि या तो कोई चीज अच्छी है या बुरी है, बीच का तो कोई तीसरा जानना तो होता नहीं है. या तो कोई काम आप कर रहे हो या तो वो हो गया है या नहीं हुआ है. दो ही टेंडेंसीज है, तो अगर हो गया है तो कॉमेडी बिकॉज़ द एंड इज गुड, अगर नहीं हुआ है कुछ लॉस हुआ है तो द एंड इज बैड, दैट इज ट्रेजेडी. तो यहाँ पे मैंने दो ही जानना की बात की थी. तो हम एरिस्टोटल की बात कर रहे हैं जो कि क्लासिकल क्रिटिक है, जिन्होंने नॉर्म्स दिए हैं राइटिंग के. जो और भी राइटर्स हैं जिन्होंने रोमन क्रिटिक्स वगैरह हैं, उन्होंने भी दो ही टाइप के प्लेस की बात करी है. एंड दोस प्लेस आर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी. तो यहाँ पे ही सेड कि देयर इज नो रोमांटिक ट्रेजेडी. हिज आइडिया वाज रिस्टोर्ड टू द क्लासिकल स्टैंडर्ड. जो उन लोगों ने उस टाइम पे बात की थी, बीसीज में भी 400 साल पहले उन्होंने जो बात की थी, ही इज टॉकिंग अबाउट दैट. ही सेड ड्रामा शुड बी ऑफ फ्यू आवर्स और अ सिंगल डे. एक ड्रामा जो होता है वो एक कुछ घंटे की स्टोरी होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा एक दिन की स्टोरी होना चाहिए. इससे ज्यादा ड्रामा प्ले नहीं होना चाहिए या इससे ज्यादा लंबी स्टोरी को डिस्प्ले नहीं करना चाहिए. अब हाउ इट इज पॉसिबल इफ वी टॉक अबाउट Hamlet. Hamlet is a story of like a particular time period when he was playing roles and searching for the culprit and wanted to take revenge. क्या ये कुछ घंटों में हो सकता है, एक दिन में हो सकता है? Not possible. If we talk about classical writings, Oedipus, Electra, Cleopatra, if we talk about Clytemnestra, Homer is an epic. चलो अगर हम classical tragedies की भी बात करते हैं तो they are also not showing the story of one day, but they are also talking about complete lifetime of a person. He is born, he is grown up, he is taking a fall and is dead. तो वो एक दिन में या कुछ घंटों में नहीं हो सकता. They were also writing about it. तो he said कि no, as Aristotle said that the episodes, the drama should be of one. जो cyclic pace की हमने बात की थी वो उस चीज को फॉलो कर रहे थे. वो 24 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, 42 डेज के अंदर, 48 डेज के अंदर वो क्या कर रहे थे, वो इसी तरीके की लाइफ स्टोरीज को लेकर उनको एपिसोड या सीन में डिवाइड करके कर रहे थे. शेक्सपियर ने भी यही करा था. He divided the complete plays into act and scenes so that the viewers, the audience can grab the reality. जो एरिस्टोटल ने लिखा था उस टाइम पे स्टेजिंग जब थी तब तो लाइट्स भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नॉर्मल लाइट्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, प्रॉपर थिएटर्स नहीं होते थे, कोई मशीनरी नहीं थी, मिनरल आइज भी नहीं थे. उस टाइम पे जो लैंप्स वगैरह चलते थे देवर ऑल वैक्स को यूज किया जाता था, रबर को यूज किया जाता था. तो उस टाइम की लाइफ अलग थी जब लोगों को समझने में चीजों को डिफिकल्टी होती थी बिकॉज देयर स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर स्टैंडर्ड ऑफ नॉलेज वाज वेरी लेस. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2000 years after that, in 16th century we are, and Aristotle belongs to the 4th century BC. तो लगभग हम 2000 साल की बात कर रहे हैं. It's a great journey human race has taken. Our level of understanding, our level of experiences, our level of knowledge is way higher than those people. We can understand, we can make the differentiations, we can understand the perspective in a very better way. So we cannot restrict it to the classical norms. यहाँ पे भी इनका आइडिया ये गलत है. And but this was his philosophy कि हमें क्लासिकल जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए. Literary work should be हिस्टोरिकली करेक्ट. हिस्टोरिकली करेक्ट कैसे होगा लिटरेरी वर्क? अगर हम उसमें डेट, इवेंट्स वगैरह की सीक्वेंस सब कुछ सही देंगे. शेक्सपियर ने कुछ गड़बड़ की बिकॉज़ ही डोंट वांट टू अटैक ऑन समवन और समवन्स लाइफ, बट ही जस्ट वांट टू, हिज पर्पस वाज टू एंटरटेन पीपल. He don't want to give you a historical background, he don't want to give you a history of a king or a queen or something. He just want to give a proper story to entertain people. ठीक है.
ट्रेजेडी एंड कॉमेडी शुड कैप्चर पार्ट। उन्होंने ट्रैजिक कॉमेडी लिखी, कॉमिक ट्रेजेडीज लिखी, रोमांटिक ट्रेजेडीज लिखी, मिक्स जॉनर्स लिखे, इसलिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अलग अलग रखना चाहिए, राइटर्स मिक्स कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। कॉमेडी शुड बी मॉरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक इन नेचर। कॉमेडी के अंदर कुछ मॉरल लेसन्स होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, शुड बी रियलिस्टिक लाइफ के बहुत करीब वो चीजों को बहुत अच्छे से दिखाती है, इस तरीके की कॉमेडी होनी चाहिए। एंड ऑल लिटरेरी वर्क शुड हैव अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर? द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर genre, then you should be aware about the tendency and the criteria of writing in the particular genre. You cannot write things. You cannot take things in a illogical way, like he was commenting on Shakespeare that when he was writing, when Shakespeare is in a verge of writing or he is doing this literary work, then obviously he is talking about the logics, he is talking about the ideas in a way that his only motive is to entertain people. उसका केवल एक मोटिव है Shakespeare का कि वो लोगों को entertain करना चाहता है, and the people of his own age also are following the same idea कि हम भी यही चाहते हैं कि लोग entertain हो, लोग वहाँ पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा viewers आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो plays हैं उनको play किया जाए। People will demand कि इसको दोबारा play करो, इसको और देखना है, और the fame should be there. But if you are putting logic to everything, if you are putting realism in everything, then all such kind of despair and sadness will be the part of entertainment and people are not going to watch it because वो एक सिंपल सा चीज बोलेंगे कि ये चीज तो ऑलरेडी लाइफ में है, हम इस सैडनेस को तो देख ही रहे हैं, हम लॉजिक को तो समझ रहे हैं, यहाँ पे हम जान लेने थोड़ी आए हैं, हम अपना जो सिद्धांत है हल्का करना है। तो शेक्सपियर वाज वर्किंग ऑन क्रिएटिंग द वर्क्स इन अ थेरेपेटिक मैनर, बट he was asking for a logical things, right? Now इसके वर्क्स में देखते हैं, इसकी फर्स्ट कॉमेडी क्या है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1598, ठीक है। दिस वाज अ की टू ऑल हिज ड्रामा, जो इन्होंने करा और इसको जो फेम मिला तो इनको लगा इसी तरीके के ड्रामा फेमस हो गए। बट आई टोल्ड यू कि बिकॉज़ शेक्सपियर हैज enacted in his drama and he get a support from a very famous writer, this particular drama got famous, but besides that he didn't get any kind of fame. Now humor is stood for characteristics of society and that जो कैरेक्टर्स हैं, जो ह्यूमर्स हैं यहाँ पे जो उन्होंने करे हैं, चार तरीके के जो ह्यूमर्स यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट करे लगी है, नेट वाज अ सटायर ऑफ द ह्यूमर इन द सिटी। इन्होंने ये यहाँ पे कैरेक्टर्स जो चार प्रिपेयर करे थे वो इन्होंने सटायरिकल वे में करे थे लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप लोग लाइफ को लेते हो, क्या क्या आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से रियलिटी में होना चाहिए, वो चीजें इन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे जो चार ह्यूमर्स हैं वो क्या है, फ्लेम। यहाँ पे देखिए आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, व्हेन यू टॉक अबाउट मेडिसिन, व्हेन यू टॉक अबाउट आयुर्वेदा, तो आयुर्वेदा में भी हमारी बॉडी में कितने तत्व बताए गए हैं, 5 तत्व बताए गए हैं, ठीक है। इट्स लाइक फायर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड एयर, ये 5 तत्व हैं, जिसमें से हम स्काई को हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्काई इज नॉट अ डोमिनेटिंग फैक्टर, बट हम उसके अलावा 4 एलिमेंट्स को लेंगे, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ। ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, दे आर द डोमिनेटिंग एलिमेंट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो इन 4 एलिमेंट्स के बेसिस के ऊपर इन्होंने 4 ह्यूमर्स को बताया, बिकॉज़ स्काई इज समथिंग व्हिच इज देयर इन आवर बॉडी बट इज नॉट is called as a soul part, is an part which also eliminates after that to the sky, वो वहीं चले जाते हैं। तो जो बेसिक 4 चीजें हैं वो यहाँ पे बताई है, लाइक फ्लेम, कॉलर, मेलांकली एंड ब्लड। ये जो 4 चीजें इन्होंने यहाँ बताई कि ये 4 बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये 4 टाइप के ह्यूमर है, वो यही 4 चीजें हैं, अलग अलग इनके मैं बताऊंगी आपको। और ये जो 4 हमारे एलिमेंट्स हैं, ये 4 एलिमेंट्स हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने में काम आते हैं। लाइक इफ आई टॉक अबाउट ब्लड, ब्लड स्टैंड्स फॉर फायर। दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी शनाया देखती है कि उनके घर का एक नौकर उनकी डस्टबिन से खाना उठाकर खा रहा है और पीछे टूटी फूटी बिल्डिंग। Like if I talk about blood, blood stands for fire. ठीक है, if I talk about melancholy, melancholy stands for earth. Melancholy stands for earth. That is sadness. Okay, if I talk about color, color stands for air. And flame for water. ये 4 आपके एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से, जिसमें ये अर्थ एलिमेंट ज्यादा होगा इस मेलांकोली, जिसमें फायर एलिमेंट ज्यादा है वो ब्लड के उसमें आ जाता है, जिसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है वो फ्लेम में, जिसमें एयर एलिमेंट ज्यादा है वो कॉलर। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पर्सनालिटी कैसी कैसी होती है, ये हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इनका वर्क है सिंथियाज रिबेल। सिंथियाज रिबेल इज अ वर्क व्हिच इज अ ट्रैजिक एंड इट्स अ सटायर ऑन द ह्यूमर ऑफ द कोर्ट, बट ये ट्रेजेडीज के अंदर भी आता है। ये वर्क इसमें जो लास्ट है वो दैट इज अ सैड एंडिंग, इट कम्स इनटू ट्रेजेडी बट इट्स अ सैटिरिकल वर्क बाय जॉनसन। नेक्स्ट इज पोटेस्टर। पोटेस्टर इज द मीनिंग ऑफ द पोटेस्टर आर पोएट्स, ठीक है। द मीनिंग ऑफ पोटेस्टर इज इट्स पोएट्स, ठीक है। एंड इट्स अ इंसल्ट टू द कंटेम्परेरी पोएट्स, ही हैज मेड फन एंड इट्स अ रिजल्ट ऑफ अ क्वारल बिटवीन हिज कंटेम्परेरी, ही वाज लेवल एट द फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ द एज ऑफ द पोएट्स। तो इसने जितने भी अपने साथ के कंटेम्परेरी पोएट्स थे, जो छोटे-छोटे पोएट्स लाइक मार्सन, चैपमैन, डेकर, हेवुड, इन सारे पोएट्स के ऊपर कमेंट किया था एंड ही मेड फन ऑफ दैट। He insulted them because they were all following the norms of Shakespeare and his writings. जैसे वो कोर्ट प्ले लिख रहे थे, कोर्टली लव के बारे में लिख रहे थे, इसी तरीके से ये लोग भी उन्हें फॉलो कर रहे थे, तो he made fun of that, he insulted them. And then is Volpone. Volpone is again a comedy. It's a satire on the contemporary society of England. He created the character and used his humors. जो इन्होंने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर की बात की थी, उसके जो ह्यूमरिक कैरेक्टर है वो इन्होंने यहाँ पे शो करे हैं कि ये कैरेक्टर्स होते हैं अलग अलग एंड हाउ he has named those characters. इसमें इन्होंने एक लिटरेरी डिवाइस का यूज करा है, ठीक है। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टोनिम। इस डिवाइस को हम बोलते हैं कैरेक्टोनिम। व्हाट इज द कैरेक्टोनिम? एज द कैरेक्टर इज, हम उसका नाम उसके बेस पे रख देते हैं। आप लोगों ने ये जो डिवाइस है कैरेक्टोनिम, इसको आप लोगों ने बहुत बार यूज करा होगा अपने रियल लाइफ में। लाइक फॉर एग्जांपल अ पर्सन यूज्ड टू स्पीक वेरी मच, तो आप उसको एक कॉमिक नेम देंगे, मैं बोला आप कोई बात नहीं करता, कम बात करता दूंगा, कोई बहुत चालाक है तो आप उसको लोमड़ी, है ना। इस तरीके के जो हम नाम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सनालिटी। कोई छोटा है तो उसको हम छोटू, गिट्टू ऐसे बोलते हैं, कोई बहुत लंबा है तो उसको लंबू बोलते हैं। तो इस तरीके के बहुत कॉमन ये हम मतलब एक तरीके से कैरेक्टोनिम यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टोनिम। इफ समवन यूज्ड टू स्पीक टू मच बट हैव अ वेरी हार्श वॉइस, तो हम उसे कौवा बुलाएंगे। तो ये यहाँ पे जो कैरेक्टोनिम यूज हुए ये एनिमल सिनोनिम हुए। इन्होंने यहाँ पे कैरेक्टर्स को किससे कंपेयर करा है? एनिमल से कंपेयर करा है। और किसी का नाम फॉक्स रखा है, किसी का नाम कॉकरोच रखा है, किसी का नाम टू रखा है, पैरेट रखा है, किस तरीके से हाउ दैट देयर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टोनिम। द नेम्स हैव बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स।
देन सबटाइटल इज फॉक्स, यहाँ पे जो कैरेक्टर का नाम है वॉल्कॉन, उसका भी सबटाइटल है द फॉक्स। उन्होंने उसको फॉक्स की तरह चालाक बताया कि एनालिसिस ऑफ मैन गवर्न बाय overcoming love for money. Volcon in order to increase his wealth plays upon the avarice of man. ठीक है, next is the Alchemist, study of quackery and gullibility. It had a perfect plot, most readable of Johnson's play. ठीक है, Alchemist जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी सिलेबस का भी पार्ट है, और इसमें जो है दैट इसमें भी कैरेक्टर नेम को यूज किया गया है, बट अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे एक सटायर है सोसाइटी का। इसमें जो स्टोरी है दैट वाज अबाउट द टाइम ऑफ पैंडेमिक, जो यहाँ पे ब्लैक डेथ हुआ था, उसके बारे में बताया गया है कि प्लेग इज हिट इन द सिटी नाउ, plague is there, and how people are reacting. Basically, people are taking advantage of the particular situation, the particular pandemic. They want to make money out of the situation, and someone is trying to help, but other people are trying to make money. So this is what this particular work is all about. Alchemist कौन होता है? Alchemist one who gives medicine. तो यहाँ पे alchemist वही है जो situation का फायदा उठा के कुछ भी medicine आपको दे रहे हैं just to make money. Whether the person is saved or is dead, that is none of his business. But he is saying that my medicine is best, and he was trying to make money. तो ये यहाँ पे trickery quackery के बारे में इन्होंने बात की है, और ये best plays में से आ रहा है. तो you need to read this play and even the Volcon. आपको ये play भी इनका पढ़ना है, Alchemist भी पढ़ना है. Apicyon एक ऐसा play है जो इन्होंने ये पिछले इसमें जितना बोला है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी को अलग अलग होना चाहिए, परफेक्ट प्लॉट होना चाहिए, मॉरलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है, और लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इन्होंने जितनी क्लासिसिज्म की बातें की हैं उन सारे रूल्स को ही हिमसेल्फ हैज ब्रोकन इन दिस प्ले. एपिक्योन देखिए जो भी ड्रामा लिख रहे थे दैट वाज नॉट गेटिंग फेमस, ही वाज अनेबल टू मेक मच ऑफ द मनी आउट ऑफ हिज राइटिंग. सो ऑब्वियसली व्हाट ही डिड, ही ट्राइड टू क्रिएट अ ड्रामा इन कंपेयर टू हिज कंटेम्परेरी राइटर शेक्सपियर. उनको लगा कि जैसे ड्रामा वो लिखते हैं एंड ही इज गेटिंग फेमस, द सिमिलर थिंग शुड बी डन बाय हिम. तो इन्होंने यहाँ पे ये एक ड्रामा लिखा जिसके जो डायलॉग्स थे दे वर नॉट इन पोएट्री बट प्रोज लाइक शेक्सपियर, और इन्होंने ये कैरेक्टर बनाया एपिक्योन का जिसमें इन्होंने डिस्गाइज भी रखा. इसमें ट्रेजेडी एंड कॉमेडीज आर मिक्स्ड. इट वाज नॉट रियलिस्टिक, इट वाज ऑल लाइक इलॉजिकल, देयर इज नो मॉरल. ये सारी चीजों को इन्होंने, और इट वाज नॉट अ स्टोरी ऑफ फ्यू आवर्स और अ डे, इट गोज बियॉन्ड दैट. तो ये इनकी स्टोरी है, और ये भी एक ड्रामा है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है. तो ये प्ले भी आपको पढ़ना है. देयर आर दीस थ्री प्ले व्हिच यू नीड टू रीड, एंड इवन द पोस्टर पे क्वेश्चंस आएंगे, किन किन के बीच में चल रहा था, कौन से प्ले, कौन से राइटर्स हैं जिनको इन्होंने टारगेट किया, ये सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं. ये 4 वर्क्स हैं इनके जो आपको पढ़ने ही पढ़ने अभी तक की राइटिंग्स में. देन बार्थोलोमेव फेयर इज नॉट अ प्ले व्हिच यू नीड टू डू. बेसिकली ये प्यूरिटन्स के ऊपर इट्स अ रिलीजियस सटायर, तो यू कैन जस्ट लीव दिस वर्क, ठीक है. नेक्स्ट प्रोज वर्क इनके कौन से हैं? टिम्बर और डिस्कवरीज मेड अपॉन मैन एंड मैटर. और ये इन्होंने बेकन जो उस टाइम पे लिखे थे, ही आल्सो ट्राइड टू राइट सम काइंड ऑफ एसेज और समथिंग बट नॉट गेट फेमस. दे आर नॉट मच लॉजिकल. देन ब्यूमंट एंड फ्लेचर जो है इनके साथ इन्होंने कुछ वर्क्स लिखने की कोशिश करी. ट्विन सोल ऑफ ड्रामा. हम ब्यूमंट फ्लेचर को हमेशा साथ में देखेंगे जब हम आगे सन ऑफ बेंस को पढ़ेंगे तब. और इन्होंने 52 प्लेस लिखे इनके साथ मिलके, ठीक है. वर्क टुगेदर क्लोजली. जब फ्लेचर आउटलिव्ड ब्यूमंट बाय 9 years. फ्लेचर द पिलग्रिम इज अ सोलो वर्क. द फेथफुल शेफर्ड इज अ सोलो वर्क. हम ये फ्लेचर के बारे में पढ़ेंगे. फेथफुल शेफर्ड्स एंड द पिलग्रिम उनका नहीं पढ़ना है, लेकिन फेथफुल शेफर्ड्स बाय फ्लेचर आपको पढ़ना है. इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. बोथ बिलोंग टू नोबल एंड कल्चरल फैमिली, यूनिवर्सिटी ट्रेन, बोथ इंटेंसली रोमांटिक. एमर्सन इज एन अमेरिकन राइटर हु सेड द सटल रिकॉग्निशन ऑफ जेंटालिटी. सो देयर वर्क इज अ सटल रिकॉग्निशन ऑफ जेंटालिटी. बहुत डिसेंट तरीके से किसी भी सोसाइटी की if they wanted to show the absurdity also, then they have showed it in a very gentle manner. Then they had met at a Mermaid Tavern and under Ben Johnson's guidance. तो इन्होंने ये कहा जाता है that they had met at Mermaid Tavern under Ben Johnson's guidance. इन तीनों की मीटिंग यहाँ पे हुई थी Mermaid Tavern के अंदर. ये टैवर्न जो होते हैं वही टैवर्न्स और इस तरीके के लोग जो कि ट्रैवलिंग प्लेस करते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टर्स होता है, उनके साथ इनकी Ben Johnson के साथ मीटिंग हुई थी. and they were happy about it. They started working together and achieved a lot. but बाद में जब इन लोगों के चलने हुए तब इन्होंने वर्क भी लिख दिया था पोटेस्टर. Now Beaumont studied at Oxford, come to London, finished his high color sentiments and also had Ben Johnson in Apicyon and Catiline. Catiline is a tragedy. The Fall इसका सबटाइटल है. Catiline का आपको नहीं पढ़ना, बहुत फेमस नहीं है. Apicyon is a famous play, लेकिन वो भी इन्होंने जो है ब्यूमंट के हेल्प से ही लिखा था. इट वाज नॉट अ सोलो वर्क, ठीक है. जगह है चार असली दावेदार, हर मैच में 2 पॉइंट. इसके इंडिविजुअल वर्क और यहाँ प्रोज वर्क से इनके जो वर्क्स हैं वो कंबाइंड और कोलैबोरेटेड वर्क्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है. ऑल आर कोलैबोरेटेड वर्क्स. हमने जो इंडिविजुअल वर्क्स लिखे थे वो देख लिए इनके. अभी ये प्रोज वर्क्स लिखे हैं, इससे पहले ड्रामा लिखे थे, पोएट्रीज भी बाकी हैं इनकी. ही हैड अ गुड लिस्ट. नाउ जॉइंट प्लेस जो इन्होंने लिखे हैं, फर्स्ट इज फिलास्टर, दैट इज आल्सो सेमिनाइन एंड ग्रिडेल्टा. ये इससे रिलेटेड है, एंड ये जो थीम है ये भी शेक्सपियर के लिए सेमिनाइन उन्हीं का प्ले था, वहां से लिया गया है. इट इज अबाउट जेलस लवर एंड फेथफुल गर्ल. ट्रैजिक ड्रामा है, नॉट सो फेमस. नेक्स्ट इज मेड स्ट्रैटेजी. ये फ्लेचर का वर्क है जो इनके साथ कंबाइनली लिखा गया था. इसमें हेनरी 8 एंड 2 नोबल किंग्समैन. ये बोला जाता है इन दोनों से मिक्स्ड स्टोरी जो शेक्सपियर के वर्क थे, इनसे एक मिक्स्ड स्टोरी लेके यहाँ पे लिखा गया मेड स्ट्रैटेजी. क्योंकि किंग हेनरी 8 के बहुत सारे अफेयर्स रहे थे, एंड ही वाज a big philanderer. He used to run after women, and you can say that he even forcefully has kept many women as his keeps. उन्होंने बहुत सारे keeps को रखा हुआ था, बहुत सारी girls को bound करके रखा हुआ था for his physical or sexual enjoyment. And Henry VIII was famous for this. He can have some girl, he can have somebody as his keep forcefully. तो चाहे वो किसी से भी शादी कर रही हो, किसी का भी कुछ भी हो, वो उनको मरवा भी देते थे, उनका मर्डर करवा के भी उनको रख देते थे. And Berlin is a big example for that. तो ये वहाँ से, और 2 noble gentlemen जो उनका वर्क है वो किंग्समैन, ये इस तरीके के छोटे प्लेस उन्होंने लिखे थे शेक्सपियर के. उन दोनों का एक कंबाइंड स्टोरी लेके इन्होंने यहाँ पे मेड स्ट्रैटेजी बताया है कि मेड स्ट्रैटेजी वही है कि a person, a king has basically kept a lady for his enjoyment. She never wanted to be his keep, and when he found that she is getting married and he cannot marry the maid, he asked a soldier to get married to the particular maid. And when he found that the maid is also loving the soldier, and the soldier is also fell in love with the maid because they both are living together, he killed both of them. तो ये मेड स्ट्रैटेजी है. king and no king, that is also a work by Fletcher. The Night of Burning Pestle, ये जो वर्क है इनके फ्लेचर के हैं. हम अगर यहाँ पे देख रहे हैं ये जॉइंट प्लेस. जॉइंट प्लेस यहाँ पे विद ब्यूमंट एंड फ्लेचर.
ठीक है, ये ब्रह्मन और फ्लैचर के साथ है। ठीक है, हम ब्रह्मन और फ्लैचर के साथ जो ये प्लेस देखेंगे, इसके अंदर आपको नाइट ऑफ बर्निंग पेस्टल के अंदर से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नेट के अंदर, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, किंग एंड नो किंग इज अ काइंड ऑफ अ स्टोरी अबाउट एडवर्ड सिक्स द सन ऑफ हेनरी VIII, बिकॉज he was made king, but just because he was the son of the last wife of Henry VIII, he was not accepted as a king. तो उनको जब ये पता लगा कि he was the son of the last wife of Henry VIII, and he started taking the criticism as he was a illegal child of the king, and such kind of criticism was not beared by the little boy, and ultimately he was murdered by the daughter Queen Mary. तो यही यहाँ पर स्टोरी है, king or no king, whether such kind of children are eligible to be a king or not. So इस तरीके की स्टोरी है about boy. And now another writer is John Baxter. He is very important writer of this period, that is Jacobean age. और इनका जो ड्रामा था, that is all about Macabre. इन्होंने बहुत ज्यादा bloodshed, treachery, supernatural elements इनको इन्वॉल्व करके लिखा है। इनके जो प्ले है वो Macabre के अंदर आते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले है इनका डचेस ऑफ माल्फी, that comes under revenge tragedy. That comes under revenge tragedy is the best tragedy of Jacobean age. इसके हर सीन और सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो यू नीड टू रीड दिस वर्क पर्टिकुलरली इन डिटेल। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरेक्टर्स का पूछा जा सकता है, इन्वॉल्वमेंट पूछा जा सकता है, ये आपको पढ़ना है। दिस इज बेस्ड ऑन, दिस इज अ हिस्टोरिकल क्लेम। देन दैट इज लॉ केस एंड पैलेस ऑफ प्लेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाइट डेविल के ऊपर भी क्वेश्चन आया है, व्हिच इज मैकेबर। इसमें सीक्वेंस से ब्लडशेड है, ट्रिकरी है। व्हाइट डेविल इज अ फीमेल, ये फीमेल टाइटल के ऊपर बेस्ड है। लाइक डचेस ऑफ माल्फी इज आल्सो अ फीमेल टाइटल, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है शी इज अ फीमेल, एंड सिमिलरली व्हाइट डेविल में विक्टोरिया इज अ प्रोटैगनिस्ट। सो यू नीड टू रीड दीस प्लेस। देन थॉमस मिडलटन। थॉमस मिडलटन का जो प्ले है, हमें वुमेन वेयर वुमेन है, चैलेंजिंग है, आर रेडी टू कैच द वुमेन। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम, देयर इज नो नीड टू गो इन द डिटेल्स बिकॉज़ इनके कैरेक्टर्स या कुछ भी पूछा नहीं ज्यादा। चेंजलिंग का जो ये कैरेक्टर है, ट्रीज एंड दी फ्लोरेस्ट, इसके बारे में कभी कुछ मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, बट नो सच काइंड ऑफ डिटेल्स कैन बी आस्क्ड। थॉमस हेवन, अ वुमेन किल्ड विद काइंडनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले, बिकॉज़ हियर ही टॉक्ड अबाउट द patriarchal society, and he wrote this play in a feministic way. He put the sympathy for the female who committed suicide. Here he talked about the disloyalty of a woman, but that was also forced by the husband. So this is a woman killed with kindness is a play which shows the patriarchal norms and how we don't put any kind of blames on a man. This is what this play is. It is very pathetic story of a domestic wife and life. It has been taken from Taming of the Shrew. ठीक है, ये भी यहाँ पे शेक्सपियर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके से लिया गया है। एंड ये जो प्लेस है, चेंजलिंग, वुमेन वेयर वुमेन, और ये सारे प्लेस भी कहीं ना कहीं इनका भी सोच वहीं दिखेगा। देन नेक्स्ट इज थॉमस डेकर। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्ले राइट, इनको आपको देखना है। ही आफ्टर योर बेन जॉनसन एंड वेबस्टर, ही इज द थर्ड प्ले राइट जिनको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं। इसमें शू मेकर्स हॉलिडे इज अ ह्यूमरस स्टडी ऑफ अ प्लेन वर्किंग मैन, सिंपल वर्किंग मैन की स्टोरी है शू मेकर्स हॉलिडे। इसको आप कर लीजिए, इसके ऊपर से स्टोरी में से क्वेश्चन आ सकते हैं। यू शुड नो द टाइटल, कैरेक्टर्स, नेम एंड हिज पर्टिकुलर रोल, क्या स्टोरी का थीम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ही वाज कंसीडर्ड एज अ इराटिक जीनियस, इनको जीनियस ऑफ द प्लेस कहा जाता है। ठीक है, उनका वो एक ही प्ले फेमस है। देन फिलिप मैसिंगर। फिलिप मैसिंगर जो है, he is a dramatic poet, and poets were too artificial, situation were usually staged, plots were too artificial. इनके जो plots थे, they were very artificial, they were not looked as a realistic. तो मैसिंगर को बहुत ज्यादा अगर हम देखते हैं तो फेम भी नहीं मिला है। in his time he was unable to get good fame. ठीक है, तो इनके जो प्लेज हैं उनको वी आर गोइंग टू सी इन द सेम वे। ठीक है, मैसिंगर को हम लोग जो जितने भी इनके ये प्लेज दिखाए हैं, न्यू वे टू पे ऑल डेट्स, दैट इज आल्सो अ वेरी आर्टिफिशियल प्ले, बट इनकी बेस्ट कॉमेडीज में आता है। इनमें कुछ आइडियल्स जो है वो बहुत ओवर दिखाए गए। ओके, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस प्ले, एंड इनका जो मेड ऑफ ऑनर और वर्जिन मार्टर, ये जो दो प्ले हैं, इनका भी आपको नाम ध्यान रखना है। यू कैन बी आस्क्ड कि ये प्लेज कौन से राइटर के हैं, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है मैसिंगर पे। देन जॉन फोर्ड। जॉन फोर्ड इज अ प्ले राइट हाइड पार्क बेस्ड ऑन फैशनेबल गॉसिप टॉक्स बिफोर हिज डेथ एट फेयरवेल ऑथेलो's occupation gone। क्योंकि इनका जो वर्क था, why he is being compared with Othello, because he was having one eyesight, केवल एक ही डायरेक्शन में सोचते थे, and was having the kind of inferiority complexness, इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑक्यूपाई नहीं करा, बहुत ज़्यादा गेट थ्रो नहीं करा अपने वर्क के लिए। एंड पार्लियामेंट वोटेड टू क्लोज द थिएटर्स इन 1642। ये जब इनकी डेथ हुई थी तो उस टाइम के थिएटर्स भी क्लोज हो गए थे। लास्ट थ्री राइटर्स मेक द एंड टू एलिजाबेथन राइटर्स। नाउ एलिजाबेथन, ये जो राइटर्स हैं, इनके साथ के 3-4 राइटर्स का ये ग्रुप है जिन्होंने एलिजाबेथन स्टाइल ऑफ राइटिंग्स का एंड यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं कि यस, विद द राइटिंग स्टाइल ऑफ दीस पर्टिकुलर राइटर्स द एलिजाबेथन एज इज ओवर, और द ड्रामा एलिजाबेथन ड्रामा इज ओवर, राइट। सो द नेक्स्ट इज सिरिल टर्नर। आर्थर्स ट्रेजेडी, रिवेंजर्स ट्रेजेडी। इसमें रिवेंजर्स ट्रेजेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे एक दिखाया गया है वही कोर्टली लव लाइक शेक्सपियर। टू पर्सन आर इन लव एंड द गर्ल वाज स्नैच्ड बाय द किंग। he tried to rape her, or he tried to molest her, but she was dead or suicided. She sacrificed herself for the sake of the true love and honesty toward the lover. When the lover get to know about the sacrifice of the beloved, he became revengeful, and then he took the revenge from the ruler or the king and also died. So that is revenger's tragedy. कुछ इस तरीके की स्टोरी है। इसमें कैरेक्टर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप देखते हैं, आप नेट का एग्जाम देते हैं, यू फाइंड दैट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर अननोन, ये तो पता ही नहीं था, काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। न्यू क्वेश्चंस नहीं है, ये इन्हीं में से आते हैं जिनको कि आप लीस्ट इंपॉर्टेंट समझ के छोड़ देते हैं। तो जो इस तरीके के वर्क है छोटे राइटर्स के हैं, उनको आपको क्या करना है, यू नीड टू गो फॉर सरफेशियल स्टडी, बिल्कुल सरफेशियल लेवल की स्टडी करनी है। इसमें क्या करना है, नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स जो है, नेम्स ऑफ मेजर कैरेक्टर्स, ठीक है, इनके आपको नाम ध्यान रखने हैं। समरी आपको पता होनी चाहिए कि क्या समरी है, जॉनरा पता होना चाहिए, कॉमेडी है या ट्रेजेडी है, एंड इफ दे हैव सम काइंड ऑफ सोर्स, देन सोर्स ऑफ द प्ले, कहां से लिया गया है। अगर आप ये 4 पॉइंट बेसिकली प्रिपेयर कर लेते हो किसी भी वर्क के, केवल पॉइंटर्स के टाइप के 4 वर्क प्रिपेयर कर लेते हो, 4 ये आइडियाज प्रिपेयर कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि इसके बाहर नहीं पूछी जाती हैं चीजें। नेक्स्ट इज प्रोज राइटर ऑफ एलिजाबेथन एज। First is Francis Bacon, Richard Hooker, Sidney and Raleigh, John Fox, Pickman and Knox, Hitchcock, Purchas, and
नॉट थॉमस नॉट। हम इन फाइटर्स में से बेसिकली आपके 2 या 3 फाइटर्स जिन्हें हमें करने हैं, उसके अलावा वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ द राइटर्स, ठीक है, उन्हें हम बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, लेकिन यस अनदर द फिफ्थ रॉयल राइटर इज फ्रांसिस बेकन, ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ एलिजाबेथन कोर्ट, ये उन्हीं के टाइम पे था, यू कैन सी, एंड हिज फादर वाज अ लॉर्ड कीपर एंड क्वीन एलिजाबेथ निकोलस बेकन वाज अ लॉर्ड कीपर एंड क्वीन एलिजाबेथ यूज्ड टू कॉल हर माय लिटिल लॉर्ड कीपर because he used to come to the court with his father, so this is the title being given to him by Queen Elizabeth. इसमें भी क्वेश्चन आता है, ये इनको टाइटल दिया गया था और ये इसीलिए रॉयल टाइटल कहलाते हैं because he was already a royal member. Now next is about him. At the age of 12 he went to Cambridge. He accompanied English embassies to France. 2 years later he came back to London. Commented, I have taken all the knowledge for my province. इनको जो करना था उसके लिए he gathered all the knowledge and is now able to create the new. Burleigh called him a dreamer and a self seeker. जो यहाँ पे Burleigh करके एक राइटर है या फिलोसोफर है, he commented him he is a daydreamer. इनकी अपनी फिलोसफीज क्रिएट कर रहे हैं, अपने आप में सेल्फ सीकर है, खुद को ही अपनी चीजें क्रिएट करके देखते हैं, he is not realistic, ठीक है। And 1582 admitted to the bar, he became a member of law council of the court of England. On the greatest birth of time, ये इनके बर्थ के बारे में इन्होंने खुद के बारे में कहा था, ठीक है। That was a prayer for inductive system of philosophy. इन्होंने बहुत सारे जो वर्क लिखे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। तो जो आपकी रीजनिंग में इंडक्टिव सिस्टम आता है वो इन्होंने करा था इंट्रोड्यूस। रीजनिंग का इंडक्टिव रीजनिंग आती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, उसमें इंडक्टिव इन्होंने दिया था। इन हिज क्रिया फॉर द प्रोग्रेस ही स्टेटेड 3 थिंग्स। फ्री इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर, किसी भी चीज को जानना चाहते हो तो जस्ट सेट टू नेचर, जाओ एक्सप्लोर करो, ढूंढो, उन चीजों को डिस्कवर करो। डिस्कवर द फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ थ्योरीज, जो किसी ने लिख दिया उसे बिलीव करने की जगह जाओ सर्च करो कि क्या जो चीज सही जा रही है वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो ही गेव द थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म। This is empiricism, teacher theory है, discovery of the facts instead of theories. Verification of results by experimenting rather than argument, that is also empiricism. These 3 became his basic philosophy, ठीक है। अब he was a successful lawyer. Johnson says the fear of everyone who heard him speak was that he should make an end. जो भी उन्हें सुनता था, Ben Johnson ने ये कहा कि जो भी उन्हें कोर्ट में सुनता था, they have a fear कि अगर इन्होंने बोलना शुरू करा तो आर्गुमेंट खत्म हो जाएगा, because he have all the logic to put an argument to an end. Now ये James I के टाइम पे जो इनके बहुत थे, James I came to throne, become devoted himself to him. He was knighted and married to a rich wife. 5 में advancement of learning इन्होंने first work लिखा था, which was focused on the change of future. It's a scientific work, ठीक है। ये साइंटिफिक वर्क है, इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात, फिजिक्स की बात थी। बिकम एन अटॉर्नी जनरल, रोट स्टेट पेपर्स बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल टेंडेंसीज ऑफ हिज एज। ही बिकम लॉर्ड कीपर ऑफ द सीन, अपॉइंटेड एज द ऑफिसर ऑफ द लॉर्ड चांसलर, रिसीव्ड द टाइटल ऑफ बैरन वेरुलम एंड विस्काउंट ऑफ सेंट एल्बंस। ये 2 जगह के इनको ये टाइटल दिए गए थे, बिकम द विस्काउंट ऑफ सेंट एल्बंस, व्हिच इज द नेम ऑफ प्लेस, एंड बैरन वेरुलम इनको दिया गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉर्ड चांसलर। ही रोट नोवम एर्गोनम, ठीक है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिस्टोटल्स और कैनन के बेस पे इन्होंने ये वर्क लिखा था, नोवम एर्गोनम, दैट मींस न्यू लर्निंग, न्यू लर्निंग और न्यू डिस्कवरीज, इनकी इन्होंने बात की थी। देन अक्यूज्ड ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब, इन्होंने कुछ ब्राइब्स वगैरह लेने का इनके ऊपर क्लेम लगा था। ही वाज सेंट टू जेल आल्सो एंड ही वाज फाइन्ड 40,000 पाउंड, imprisoned, banished forever for parliament and court, and he wrote a great place and insuratio magna। ये 2 वर्क इन्होंने उस टाइम पे लिखे when he was banned from the court, ठीक है। देन he wanted to prove that snow can be used as a preventive instead of salt and he died of exposure। ये इनके खुद के एक्सपेरिमेंट की वजह से he died। When he was traveling to France he found a bird who just fall on him when he was traveling on the horse। विंटर सीजन में एक बर्फ पे से एक चिड़िया मर गई और गिरी इनके पास, तो इन्होंने उठा के उसको प्रॉपर ग्रेव करा, वहाँ पे स्नो थी तो स्नो से ही उन्होंने ग्रेव करा, वहाँ पे एक क्वेश्चन फ्लैग टाइप लगा दिया, एंड देयर the idea came in his mind, if I'm putting something in the snow, I should know that what happens, what is the structure of this particular thing. Instant Eraser Concealer erases dark circles on Indian skin tones from neighboring New York. When he was coming back after a few days or a month, he saw that the grave was still there, and he found that the bird was also the same. जैसा था वो वैसा का वैसा ही था, because it was free frozen, but it was not spoiled. तो इन्होंने ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और उसकी वजह से he was finding कि ये bird का ऐसा हो गया है। तो now he started trying to freeze the thinner, paraffin in the snow। कि इसको अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे इसमें कोई चीज रखी है तो what happens to him and how it converted or being saved in the snow। तो वो खुद वहाँ बाहर स्नो के एक्सपोजर में बैठे थे कि इसका क्या होता है, स्नो किस तरीके से काम करती है, what are the changes come in his body or the structure। उसे ऑब्जर्व करने के लिए पूरी रात स्नोफॉल में बैठे, got the pneumonia and he died, ठीक है। Macaulay said the great postal of the experiment of the philosophy was destined to become its martyr। जिसने नई फिलॉसफीज को जन्म दिया, एक्सपोजर दिया, उसको इन्वेंट करके यहाँ पे दिया, and he died for the particular knowledge only। तो he dedicated his life to philosophies and learning, क्योंकि बेकन ने किया भी वही। Now his works, philosophical works में first advancement of learning and novum ergonum, both are part of Insuratio Magna। इसके अंदर इन्हें कंबाइन कर दिया गया था, the great institution of philosophy, Insuratio incomplete and based on education। Insuratio Magna के अंदर आपके education and its type, उसके importance की बात की गई है, इसको that complete work is dedicated to education। Insuratio Magna 6 part में है, first is learning of science, that is advancement of learning, then इसके बाद first part partitions of centurium, that based on the classification and summary of all the knowledge, philosophy and speculation must be cast out, then science should be based on education and it may have many subparts, इसमें काफी चीजें हैं। Second is novum ergonum, that is new instrument, new learning के ऊपर new instrument, emphasize on the use of reason and experiment instead of Aristotle's logic। उन्होंने कहा जो एरिस्टोटल ने लॉजिक दिए हैं उनसे ज्यादा चीजों को जाके सीखिए। Idols, they are suggested 4 source of human ignorance। idol of tribe, सबसे पहले हम जो भी रेस से बिलोंग करते हैं उनके आइडल्स की ही बातें सुनते रहते हैं, मानते रहते हैं, चलते जाते हैं। idol of caves and den, जो वहाँ पे पर्सनल peculiar और prejudices, जो वहाँ पे चीजें बनी हुई हैं हम उसी के अंदर कैद होके रह जाते हैं, we became the member of den। then idol of market place, जो जिस तरीके की बातें हो रही हैं, जो हमें एक तरीके की ट्रेडिशन पीछे से आ रहे हैं और हमें बताया जा रहा है, we became the part of the particular market place or you can say the particular tradition, हम उसी का ही पार्ट बन के रह जाते हैं। then idol of theater, the unreliable tradition of man, ठीक है, हम जिस तरीके से लोग इनैक्ट कर रहे हैं, we also became the idol of that, we became the part of that। now historia naturalis at experimentalist, that the study of the phenomena of nature, then scala intellect, letter to the mind, ये सब इनके philosophical and scientific works हैं। then Ptolemy is a prophecies of anticipations, ये भी इनका important work है। philosophy as Punda, that is the second record of the practical knowledge of the philosophy, ये थे इनके खुद के works। now William Blake, what he has said to his essays are a good counselor of Satan's kingdom, because his essays belong to the practicality not of philosophies or morality। इसलिए उनको बोला है कि he was a good counselor of Satan's kingdom, that is the human heart। Insuratio Latin is a self-helper
and Bacon regarded Latin as the only language worthy of writing. तो इनके सारे टाइटल्स लेटिन में ही लिखे हुए हैं. His essays are total 58 in number and that was published in 1580. इन्होंने 3 पार्ट में इसको पब्लिश किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एडिशन. और इनका जो थर्ड एडिशन है वो 1625 में आया था, जिसके अंदर इनके ऑल 58 एसेज एक साथ पब्लिश हुए थे. इनके फेमस एसेज ये हैं जिसमें से आपको ऑफ स्टडी, गुडनेस, अथेइज्म, यूनिटी ऑफ रिलीजन, फ्रेंडशिप, कनिंग नेगोशिएशंस वगैरह नहीं भी करेंगे तो भी ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ ऑफ स्टडीज यहाँ पर आ गया है. एक ये इनका ऐसे है. और फ्रेंडशिप आ गया है. एनिमिटी भी एक है. ऑफ थर्ड थॉट, ऑन थर्ड थॉट, ये भी इनका इंपॉर्टेंट ऐसे है. ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है. देन न्यू अटलांटिस इज अ साइंटिफिक वर्ड जिसमें इन्होंने यूटोपियन सोसाइटी की बात करी है और इन्होंने एक हिस्ट्री लिखी थी ऑफ हेनरी 7. अब रिचर्ड हुकर, इनका जो वर्क है दैट इज द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ वाज टोल्ड बाय आइजैक वॉल्टन, दैट इज इंपॉर्टेंट. लेकिन हम रिचर्ड हुकर को नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ही इज नॉट सच एन इंपॉर्टेंट राइटर. सिडनी और रॉले को हम पढ़ेंगे. सिडनी रोड आर्केडिया जो मैंने आपको फिलिप सिडनी का दिखाया था, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ. इट्स अ पेस्टोरल रोमांस एंड डिफेंस ऑफ पोएसी के बारे में बताया. दिस इज अ क्रिटिकल वर्क, इट्स अ वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म. रॉले की जो राइटिंग है दैट इज डिस्कवरी ऑफ जेनेवा, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये दो वर्क इनके हैं. एंड ही वाज अ ट्रैवलर, ही वाज अ पर्सन हु ऑलवेज पुट हिमसेल्फ इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ वॉयेजेस. ये दुनिया भर की यात्राओं पे निकल जाते थे और अपने एक्सपीरियंस इसको यहाँ पे शेयर करते रहते थे. तो हमें बेकन के साथ साथ वी नीड टू पुट फोकस ऑन द नेम्स ऑफ सच काइंड ऑफ राइटर्स जो अपने लाइफ को बेसिकली राइटिंग्स के लिए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए डेडिकेट करते हैं. तो हमें उनका नाम पता होना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. तो ये यहाँ पे जो सिडनी और रॉले हैं, ये इंपॉर्टेंट राइटर है. सिडनी तो मैं आपको बता चुकी हूँ कंप्लीटली. रॉले के इन दो बुक्स का आपको नाम ध्यान रखना है. एंड ही वाज ऑल दीस वर्क्स आर ट्रेवलॉग्स. These works are travelogues. Travelogues experiences during the traveling. ठीक है, जो जर्नी के दौरान जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका जो इनकम्पाइल होता है उसको travelogues बोलते हैं. जॉन फॉक्स का बुक ऑफ मैटर इज इंपॉर्टेंट. इसको हम देखेंगे. जॉन फॉक्स को मैंने आपको कहा था हमें जॉन फॉक्स लिखा है. इनका बुक ऑफ मैटर, द सबटाइटल इज एक्ट एंड मॉन्यूमेंट्स. ये पब्लिश्ड इन 1559 एंड ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश लेटर ऑन. इसमें इन्होंने चर्चेस की बात करी है. ये टॉक्ड अबाउट मैन, वुमेन, क्वीन मैरी के रूल में जो प्रॉब्लम्स हुई थी क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स को उन्होंने मरवा दिया था. जो मैन और वुमेन को उन्होंने कंट्री से निकाल दिया था वो कैसे बाहर जाके सेटल हुए, कहां सेटल हुए, कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट की. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ड्यूरिंग द रूल ऑफ क्वीन मैरी टू. दैट ऑल काइंड ऑफ सफरिंग्स, ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर बीइंग एनकम्पाइल्ड बाय जॉन फॉक्स इन द बुक ऑफ मैटर. इनको देखा और इन्होंने उन सारे लोगों को जिनको बिहेव किया था क्वीन मैरी ने, उन सबको मार्टर ट्राइड. दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ टू सेव द रिलीजन बिकॉज़ दे वर प्रोटेस्टेंट एंड दे हैव नॉट गिवन अप देयर रिलीजन बिलीफ्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फियर और अ रूलर. ऑन द डिमांड ऑफ द रूलर दे हैव नॉट कन्वर्टेड अगेन टू कैथोलिसिज्म और एक्सेप्टेड द प्रोफिकेसी. उन्होंने चर्च करप्शन को एक्सेप्ट नहीं करा, उसके लिए सवाल उठाई और चाहे रूलर ने करा चाहे चर्चेस ने पावर ने उनको मारा, उनको जो भी करा, बट दे हैव नॉट सपोर्टेड द रॉन्ग. तो उनको उन्होंने मार्टर कहा है. जो है वो हिस्टोरियन और इन्होंने ब्रिटानिया लिखा है 1586 में. एंड इट वाज मार्क्ड फॉर द ट्रू बिगिनिंग ऑफ एंटीक्रिटिकल रिसर्च इन द फील्ड. एंटीक्रिटिकल रिसर्च को बोला गया है. एनल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, इसको आप लोग याद रखेंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क कि विलियम केटमिन ने एनल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ लिखा है. मैंने सारे उन एक्सपीरियंसेस को कंपाइल करा है जो क्वीन एलिजाबेथ के रूल से रिलेटेड है. इसमें सारे फैक्ट्स मिलते हैं, इसमें काफी सारी चीजें मिलती हैं. इट्स अ काइंड ऑफ हिस्ट्री बुक. ही वाज हिस्टोरियन, दिस हिस्ट्री बुक. ठीक है. देन जॉन नॉक्स, ही वाज अ रिफॉर्मर, रिलीजियस पर्सन थे, रिफॉर्म की बात करते थे और इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द रिफॉर्मेशन इन स्कॉटलैंड को लिखा है. बट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस मोर ऑन दैट बिकॉज़ इन दोनों ने क्वीन मैरी और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट इसमें लिखा है. जो हम उनके अगेंस्ट स्टोरीज मिलती है वो यहीं से मिलती है. बट दिस इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट वर्क व्हिच वी शुड रिमेंबर. इसको आप छोड़ सकते हैं. हुकोल्ट और पचास जो है ये भी क्लर्जीमैन थे बट दे आर आल्सो हिस्टोरियन. दे हैव कंपाइल्ड वेरियस वर्क्स. इसको हम 50 पिलग्रिम्स भी बोलते हैं यहाँ पे. और इंपॉर्टेंट वर्क है इनके वॉयेजेस एंड डिस्कवरीज, इन्होंने इसके ऊपर लिखा है. ठीक है. नेशंस जो है वो 3 वॉल्यूम में है. ये इस तरीके से बचा हुआ है. यू कैन जस्ट रीड दिस राइटर्स और इनके वॉयेज टू नॉर्थ टू इंडिया एंड जो भी इनके जर्नीज के एक्सपीरियंसेस है यही है. तो हुकोल्ट और पचास जो है इनको वी आर नॉट कंसीडरिंग इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. देन आता है आपका सैमुअल पर्चेस. ही इज द वन हु इज इंपॉर्टेंट. अगर हम इसको इंडिविजुअली लेते हैं देन ही इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. खासकर इनकम टैक्स कैलकुलेटर में जानिए आपका टैक्स कितना होगा. बस साल और एज चुने, अपनी सालाना आय, किराए और ठीक है. और इनका जो 50 एक्सपेरिमेंट वर्क है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इसके ऊपर क्वेश्चन आया है. यहाँ से बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे वर्क्स को का सोर्स है ये. ठीक है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. यू शुड नो अबाउट द सैमुअल पर्चेस एंड हिज वर्क. नाउ थॉमस नॉर्थ का जो वर्क आता है दैट इज ही वाज नोन एज अ ट्रांसलेटर ऑफ एलिजाबेथ एज. इन्होंने एलिजाबेथ एज के बहुत मेजर वर्क को ट्रांसलेट किया है. ही ट्रांसलेट प्लूटार्क्स लाइफ. प्लूटार्क्स लाइफ इज अ लेटेंट वर्क. इन 1579 शेक्सपियर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस प्लूटार्क्स लाइफ से बहुत सारी चीजें मिली जिनके बारे में उन्होंने लिखा था. एंड थैंक यू. आई लाइक नॉट दिस पेल लुक. सीजर के बारे में, जूलियस सीजर के बारे में उन्होंने कमेंट भी करे हैं. ही लाइक दैट कैरेक्टर एंड एक्चुअली ही पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर इन अ वेरी वेल वे. देन हिज ट्रांसलेशंस वर मेड फ्रॉम अमेट excellent French translation. This aspiring interpreter of the great biography Emerson called him the historian of heroism because he picked up all the royal and Greek Roman heroes and did the translation of their lives, put them into a volume that was the name with the Plutarch's life. उसके अंदर इन्होंने उन्हीं को ढंग से translate किया. Which become the source, major source of Shakespeare's historical plays in the Roman category. जो Roman historical plays है उसका main source था इनका work. And this is how this complete age is dignified with the writers and compilers, historian. यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कितने genres हमें अभी मिले हैं. हमें इस complete age में अगर हम देखते हैं तो poetry was there, poets we have done, even Ben Jonson की बहुत सारी poems है, but there is no such important poem which we should remember or being asked in the examination. हमने छोड़ रहे हैं. हमें यहाँ पे ड्रामा मिले, ड्रामा के अंदर कॉमेडी ट्रेजेडी दोनों मिली. हमें यहाँ पे प्रोजेस मिले, प्रोजेस के अंदर हमें एसेज एंड क्रिटिसिज्म दोनों चीजें मिली हैं. देन इसके बाद हमें ट्रैवलॉग्स मिले हैं. ट्रैवलॉग्स कम इन नॉन फिक्शन. तो यहाँ पे जर्नी, ट्रैवलॉग, हिस्ट्री, ट्रांसलेशंस, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं जेकोबियन एज में. तो ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ राइटिंग्स वर देयर. सभी तरीके की राइटिंग्स को यहाँ पे कंपाइल किया गया, सभी तरीके की राइटिंग्स को यहाँ लिखा गया. नाउ आई हैव टोल्ड यू द इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड देयर वर्क्स. नाउ मैंने जो आप लोगों को स्टार्टिंग में पूरा रेनेसेंस का बताया था, मैं यहाँ पे फिर से उसको एक बार आपको रिमाइंड कर देती हूँ. ठीक है. रेनेसेंस एज को हम लोगों ने डिवाइड किया था 2 पार्ट के अंदर.
एलिजाबेथन एंड जेकोबियन। और इसके जो राइटिंग्स हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा था कि हम इनको किस तरीके से लेंगे। फर्स्ट हमने लिया था अर्ली राइटर्स which has given contribution to the works, ये अर्ली राइटर्स थे। देन अर्ली राइटर्स के बाद यहाँ पर आ जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी विच दैट वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ पोइट्री। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पोइटिक स्कूल है, फर्स्ट पोइटिक और ड्रामेटिक स्कूल ऑफ लिटरेचर। देन थर्ड आपके आते हैं 5 रॉयल राइटर्स, वी हैव डन दैट। ये रॉयल राइटर्स कौन है? फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, फ्रांसिस बेकन, 5 रॉयल राइटर्स के थे। और इसके बाद आपके आ जाते हैं सन ऑफ मैन, जिनको हम मेजरली जैकोबियन राइटर्स की तरह लेते हैं। Now these 4 categories are being completed, so our Renaissance period is over today. I wish you all the best, and from tomorrow we are going to take the next age. So stay tuned. And before going, I want to make again the announcement that mark your bells, get ready, join the batch.